Okay, welcome again, students. Today we are now entering into the unit number 2, and the name of the unit is current electricity. In this unit, we will first study about electric current and Ohm's law. In the previous unit, we have studied about electrostatics, where the charge is at rest, and we have studied various properties which are related to the charge when it is at rest. For example, we study force between two charges in terms of Coulomb's law. We study electric field. We study electric potential energy, electric potential difference. Then we study capacitance of a conductor, various types of capacitors, parallel plate capacitors, spherical capacitors, cylindrical capacitors. In fact, we have not studied those two types. We have studied only parallel plate capacitors. Then we study about how we can arrange different capacitor in order to obtain the desired value of capacitance. Then in the end, we study about a device which can be used to produce a large value of electric potential, and the name of the device is Van de Graaff generator. In that chapter, in that unit, first unit, we study only about when the charge is at rest. When the charge is in motion, then that charge constitutes the electric current. So in this chapter, this is a very interesting chapter where we study about the motion of the charged particle and its effect. So first of all, we will study about the electric current and Ohm's law is unit के अंदर. Before we start this unit, we must understand what is electric current. What is the meaning of current? You know, current is something related to flow. For example, we know air current. We have listened about water current. That means anything which is flowing constitute a current. Current itself means flow. When we start discussing about this electric current, that means electric current is something related to the flow of charged particle. So we can say that electric current is defined as the flow of charged particle. Whenever we use the term electric current, at that time you must understand that we are talking about flow of charged particle, flow of electrons, flow of ions, flow of cations, flow of different particles. That means electric current, once again you must remember, electric current is something related to the flow of charged particle. Now you must understand, when we say current is something flow of charged particle, what are those charged particles which are inside the solids, which are inside the liquids, and which are inside the gases? You must understand what are those current carriers, what are those charge carriers which are inside the solids. First, what are the solids? Say iron, copper, aluminium, any material which is a conducting material and which is a solid. In those solids, that charged particle which constitute flow, which constitute electric current, are the free electrons. Now, what are these free electrons? In order to understand these free electrons are inside the atoms. You know what is inside the atoms? Inside the atoms there are nucleus. There is a nucleus, and the electrons are revolving around the nucleus in orbits. And those electrons which are close to the nucleus, they are very strongly attracted by the nucleus. Because electrons are negative, nucleus is a positive charge center. And those electrons which are at the outermost orbits of an atom, those electrons, they are almost free. And those free electrons, they constitute the charge carrier inside the solid. So you must remember what are the charge carrier in the solids.
In the solid, the charge carriers are free electrons which can move inside the conductor, inside the solid. When you talk about the liquid, what are the charge carrier in the liquid? In the liquid, the charged particles are something like ions. For example, if you have a solution of HCl. HCl is hydrochloric acid. This hydrochloric acid is in the form of ions, H ions, hydrogen ions, and chloride ions. For example, if you take the solution of copper sulfate, CuSO4, this copper sulfate solution is in the form of copper ions. Copper ions has two valency, two positive, and sulfate ions. That means in the liquid, the charge carriers, current carriers, they are in the form of ions. What are the charge carrier in the gases? When we talk about the gases invariably, in general, are bad conductor of electricity. They don't carry the current. For example, air is a bad conductor of electricity. But when very high voltage is applied, then these gases, they splits into ions. For example, if you take oxygen splits into ions. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा और आयन बन जाएगा. Electron will come out of this oxygen and convert this oxygen into ions. That means gases which are invariably insulators, they can become conductor when a very high electric potential is applied. Very high electric field is applied. So you must understand, you might have now known that current carriers in the solids are free electrons. In liquid, these are the ions, and in the gases, which are invariably insulators, when a very high electric potential is applied, then those atoms or molecules of the gases, they splits into ions. Now, let us understand the definition of electric current. What is the meaning of electric current? What is the definition of electric current? For example, I have told you the electric current. Electric current is something flow. Current is something flow. When we talk about electric current, that means something flow of charge. So electric current can be defined as, electric current can be defined as rate of flow of charge. Electric current can be defined as the rate of flow of charge. Let us say, let capital Q charge flow through a conductor in time t. t टाइम के अंदर Q चार्ज फ्लो करते हैं. Then we can say that electric current I is equal to Q upon T. That means Q charge is flowing in time T. So in unit time, how much charge is flowing? Q upon T. This is the definition. This is a formula of electric current. That electric current is equal to charge upon time. Charge upon time. If we say, if n is number of electrons, number of free electrons, flowing in time t, then
this I is equal to, what we can say, Q. Q is the total charge. How many electrons are flowing? N is the number of free electrons. N is the number of electrons which are flowing. Therefore, charge on N electrons, that is Ne. Charge on one electron is E, and the charge on the N electron is Ne. That is Ne upon T. So instead of Q upon T, we can write Ne upon T also. This is also the definition of electric current. Now let us understand its units. What are the units of electric current? The units can be derived from this formula. If we say, if Q is equal to 1 coulomb, let us say 1 coulomb charge is flowing in a conductor. Now try to listen me. 1 coulomb of charge is flowing in a conductor in 1 second, in time equal to 1 second. Then I is equal to how much? Then I is equal to, we can write in place of Q as 1 coulomb and in place of T 1 second. This is equal to 1 coulomb per second. 1 coulomb per second. This coulomb per second is called ampere. This is 1 ampere. So you must remember the unit of current. The unit of current is ampere. The unit of current is ampere. So you should remember it. This is the unit of current. There are small units of current also. For example, the unit of length is meter. There are small units of length as well. What are those units of length? Centimeter, millimeter, inch, foot. They are also used in various calculations. Similarly, the unit of current is 1 ampere. There are many more units which are smaller than ampere. What are those? What are those units? 1 milliampere. इसको हम मिली एम्पियर. This milli word, milli means 10 raised to power minus 3 ampere. That means milli means 10 raised to power minus 3 ampere. There is another 1 microampere. If the current is very, very small, then the current is measured in microampere. That is 10 raised to power minus 6. Micro means 10 raised to power minus 6 ampere. These are the smaller units of electric current which can be used when the current is very, very small. Now the question is, what is the direction of current? What is the direction of current? We have to understand the direction of current as well. Let us say this is a conductor. These are the free electrons. These are the free electrons. If this conductor is given a positive potential in this side, that means this is a conductor. This end is at positive potential, this end is at negative potential. That means this end is at higher potential, this end is at lower potential. These free electrons, they are negatively charged. So these electrons, they will move towards positive end, positive, higher potential. They will move towards higher potential. And the direction, that means we are applying electric field. Electric field is always from positive to negative. That means electric field is in this direction, positive to negative. And current is
current is in this direction, what we can say? We can say when we applied electric field across a conductor, then the free electrons, they will move towards the higher potential end, and hence the direction of the current is opposite to the direction of applied electric field. That means direction of the current is opposite to the direction in which free electrons are moving. We can say the direction of current is opposite to the direction. The direction of current is opposite to the direction in which free electrons in a conductor is moving. In which free electrons in a conductor is moving. Is this direction of current, this is called conventional direction. Conventional direction. We say this direction of current as a convention. There is no logic behind why we say current is moving in this direction. We just assume that the current is flowing in a direction in which electrons are moving opposite to that. In a direction opposite to the motion of electrons. So you must remember, what is, if I ask you a question, in which direction current is there in a conductor? Yeah, what is the direction of current in a conductor? So you must answer the direction of the current in a conductor is always opposite to the direction of flow of electrons. कहने का मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है. इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब हमें यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन होती है. अब आपने +1 ने ये पढ़ा है, बट यू हैव स्टडीड दैट दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायरेक्शन आल्सो दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. बट this electric current, this is having direction also, magnitude also, but this is not a vector quantity. This is a scalar quantity. This electric current can be added or subtracted just by ordinary algebra rules. जो algebra के rules हैं उनका हम इस्तेमाल करके इसको add या subtract कर सकते हैं. So electric current in fact has a direction, but it is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity. You should not confuse it with its direction. We say that electric current has a direction, so it is a vector quantity. No. In fact, it has a direction, but it is still a scalar quantity. So we have just understand what is the nature of electric current, what is the direction of electric current. Now let us understand what is the different types of electric current. इनको हम स्टडी करेंगे. What are those different types of electric current? What are those different types of electric current? Different types of electric current. यहाँ I am telling you about 3 types of electric current with the graph, with the diagram. Say, one is this. Along this direction is time, and this is the magnitude of current. Along this direction is the value of current. If the current is like this, what does it shows? If the current is 5 ampere,
say for example 5 ampere या I, then it remains I throughout the time. It is not changing. This type of the current is called steady DC current. Steady DC current. What is this DC? DC is direct. This is called steady DC, direct current. D is for direct, C for current. That means, what is steady DC? What is steady direct current? When the value of current remains same and its direction also not changing with the time. यदि करंट की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही हो तो उस करंट को स्टेडी करंट कहते हैं। यदि ऐसा हो, like this is time, this is current, in this direction is current. If the current is like this, what is happening here? Now the value of current is this much, then it is increasing, then decreasing, and then it is increasing, say like this, ऐसे रहे। अब यहां पे क्या हो रहा है? करंट की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। द वैल्यू ऑफ करंट इज चेंजिंग, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज नॉट चेंजिंग। This type of the current is called varying DC. Varying DC का मतलब है variable direct current. The current whose magnitude is changing with the time, but its direction is not changing. That is called varying DC. The current whose magnitude is changing, but the direction is not changing. There is another type of the current which we will study in the 4th or 5th unit. That is also very, very important unit, and that current is called of this type. The graph is like this. In this direction is current. Here current is 0, and here in this direction current is changing its direction. That means if the current is increasing in the upward direction, then the current is decreasing in the downward direction. If the current is like this, what is happening over here? You see here, as the time passes, as the time increases, the value of current is increasing, then it becomes a maximum. Now it is decreasing. Here it becomes 0. Now it is increasing, but it is increasing in opposite direction. It is reversing its direction. ये अपनी direction उल्टी कर रहा है. Then it becomes maximum in reverse direction. Now again it is increasing. Then it becomes again 0. Again it is increasing. Then it becomes maximum. Now here this type of the current where the magnitude is continuously changing and direction reverse periodically. एक certain time के बाद direction भी reverse करती है. This type of the current is called alternating current. Alternating current. This is called alternating current. So you have study about 3 types of current. One is called steady DC. That means where the current, the value of the current remains always same, direction does not change. And this is varying DC. Where what we study where the direction remains same, but the value of the current is changing with the time. And over here, in this type of the current, the value of the current is changing with continuously with the time, and its direction is reversing after certain period. And its direction is reversing after every certain period.
that type of the current is called alternating current. This type of the current we will have a very large chapter. This type of the current is in our house. जो अभी घरों में हमारे बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, और ये जो करंट है ये हमें मिलता है जो हमारे सेल हैं, जो बैटरी है, जो जिसको हम टॉर्च में डालते हैं, जिसको रेडियो में डालते हैं, वो हमें स्टेडी करंट उससे मिलता है। तो हम स्टडी करते हैं, एक और टॉपिक है इसमें, एक और कंसेप्ट है जिसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। ये करंट डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को हम J वर्ड से लिखते हैं। J इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो करता है? कंडक्टर में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया, area of cross section, that is equal to J is equal to I upon S। मैं उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको लिख देता हूं S। अब ये S क्या चीज है? यदि ये हमारे पास ये कंडक्टर है मान लीजिए, तो ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ, ये एरिया, ये जो रिंग है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, दैट एरिया, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, यहां से जो करंट पास कर रहा है, दैट करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो वी कैन डिफाइन इट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। अगेन लिसन, what is the definition of electric current density? Electric current per unit area is defined as electric current density. What are its units? करंट के यूनिट एम्पियर, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, क्या बन गए? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन, करंट डेंसिटी के डायमेंशन, करंट के डायमेंशन होते हैं एम्पियर। ए, इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। There are 7 fundamental quantity: mass, length, time, amount of substance जिसका यूनिट मोल होता है, इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट एम्पियर होता है, टेम्परेचर जिसका यूनिट केल्विन होता है, एंड वन मोर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट कैंडेला होता है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनके यूनिट से हम किसी भी क्वांटिटी के यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं, और अदर जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स इसका एम्पियर है। तो इसके जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे? करंट के होंगे एम्पियर, एरिया के क्या होते हैं? L2। तो क्या बन गए हमारे पास? इसके डायमेंशन क्या बन गए? A L-2। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ml को भी लिखते हैं, m नहीं है यहाँ पे तो m की पावर 0 है, l कितना है यहाँ पे? -2 है, t नहीं है यहाँ पे तो t की पावर 0, और a की पावर 1 है यहाँ पे a। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये भी इसका तरीका है लिखने का। करंट डेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन उस तरफ को होती है जिस तरफ को करंट की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी which has the direction in the direction of electric current, which has the direction same as the direction of electric current। तो इसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट अब हम स्टडी करेंगे, आज का लेसन यहाँ पे खत्म करें इससे पहले एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कंडक्टर के अंदर कैसे फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर।
Let us say this is a conductor, this is a wire. This is a wire. हालांकि इतनी मोटी वायर होती नहीं है, वायर बहुत पतली होती है, लेकिन मैं उसको मैग्नीफाई करके बना रहा हूं. दिस इज ए वायर. और इस वायर में क्या मौजूद है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? क्योंकि ये जो वायर है ये एटम्स की बनी हुई है. उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं. और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको ऑर्बिट कहते हैं. इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं. जो इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर के ऑर्बिट में होगा उसके ऊपर इस न्यूक्लियस की पकड़ सबसे ज्यादा होगी. मतलब इस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे ज्यादा होगी. जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी. और जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होगी. मतलब ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे बिकम ऑलमोस्ट फ्री. दे कैन लीव दिस एटम. And those electrons which can leave this atom, they are known as free electrons. How they can leave? Because they possess that much amount of energy which is required to come out of this nuclear force. And that energy can be given in the form of a thermal energy. जैसे हीट कर दें हम उसको सब्सटेंस को, तो क्या होगा? हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इस सेल को निकल के बाहर निकल जाएगा. जैसे हम इसको अपने लोकल भाषा में समझ सकते हैं कि ओके लेट्स डिस्कस इट लेटर, समटाइम लेटर. So these are the free electrons. Now these free electrons inside a conductor. For example, if I say a conductor, if I say this is a conductor, this is a if we say this is a wire, then it has a large number of free electrons. Though all those free electrons they are moving randomly. They are moving randomly like this. Some are moving in this direction, some are moving in this direction, some are moving in this direction. Like this. They are moving randomly. And the velocity with which these electrons are moving, that is called their thermal motion. Velocity with which these free electrons moves inside the conductor is about 10 raised to power 5 meter per second. आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बहुत ज्यादा स्पीड है. इसको आप ये कह सकते हैं कि ये लगभग 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है. 100 किलोमीटर पर सेकंड. ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं. तो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता? जैसे मान लो आप घर में किसी लोहे की ग्रिल को पकड़ लें, आप चम्मच को पकड़ लें, आप कुकिंग मटेरियल का किसी कुकर को पकड़ लें, तो आपको करंट क्यों नहीं लगता? ये चार्ज कैरियर तो मूव कर रहे हैं बट दे आर मूविंग रैंडमली. इसलिए जो इनका नेट फ्लो है वो कितना है? इफ आई से ओवर हेयर, इफ आई से ओवर हेयर, तो वी से इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. दैट मीन्स नेट फ्लो कितना है यहाँ पे? तो इन द absence of, when there is no electric field, when there is no electric potential applied, then we say that the net motion of these free electrons inside the conductor is 0. In the absence of external electric field, net motion of free electron is 0.
That means if 5 electrons are going to the right side, 5 are coming to the left side. If 5 are going in the upward direction, 5 are coming in the downward direction. That means their net flow of the charge is 0. Now, if we apply the electric field, what will happen? If we apply the electric field to this conductor, what will happen to this conductor? If we apply the electric field to this conductor, what will happen? When we apply the electric field, that means we will make this end positive, this end negative. That means electric field will be there in this direction. This is the direction of electric field, positive to negative. हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. या इस कंडक्टर के अक्रॉस we apply a very high electric potential. We apply electric potential. Now what happens? All these free electrons, which are moving randomly earlier in the earlier picture, which are moving randomly, now they start moving in the direction of, all are moving in the direction of, in this direction, opposite to the electric field. All are moving in opposite to the electric field. Now what is there? If you see a very small portion of this conductor, all electrons are moving in this direction. That means there is a net flow of charge. There is a net flow of charge. और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जो रैंडमली मूव कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन दे स्टार्ट्स मूविंग इन वन डायरेक्शन, दे स्टार्ट्स कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द कर्नल्स. देयर आर कर्नल्स आल्सो. Kernels are the part of atom which has left its electron. उस, क्योंकि यहाँ पे एटम्स भी हैं, उस एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अलग निकल गए, लेकिन जो एटम बच गया, दैट एटम इज कॉल्ड कर्नल. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये सारे के सारे इस तरफ को रस करेंगे, तो ये इन कर्नल्स के साथ कोलाइड करेंगे या आपस में कोलाइड करेंगे. जब ये कर्नल्स के साथ कोलाइड करेंगे, व्हेन वी से इफ यू आर इन ए स्कूल एंड ऑल ऑफ सडन यू फाइंड दैट when you are suppose you are in a hall, say 100 students in a hall, and all of a sudden you come to know that there is a snake in the hall, and students earlier were playing in the hall. What happened? Every student will try to rush outside. When they try to rush outside, they try to come out of the hall. That is, there is only one door in the hall, and everybody is coming out of that hole. Then students will start colliding with each other. तो कहने का मतलब, अब उनको जो हॉल से बाहर निकलने के लिए जो समय है वो ज्यादा लगेगा. यदि वो एक एक करके बाहर निकले तो वो जल्दी से निकल सकते हैं. तो जब अफरा तफरी मचती है, जब पैनिक क्रिएट होता है, जब स्टैम्पेड होती है, तो लोग एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे को कुचल डालते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे होगा. ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स दे विल स्टार्ट मूविंग दिस डायरेक्शन. They will collide with each other. That means electrons will collide with another electron or kernel. Its velocity becomes 0. Then it will again starts moving. Then again it will collide with another electron or another kernel. Again its velocity becomes 0. That means its velocity is something like this. It starts moving, stop. Then again starts moving, stop. That motion, that velocity with which these electrons they are moving inside the conductor, that is called drift velocity. The velocity with which the free electrons moves inside the conductor on applying electric field
is called drift velocity. इसको हम v के नीचे सफिक्स लगाते हैं, छोटा सा v के नीचे सफिक्स लगाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आप सरप्राइज होंगे, इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is approximately 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कह सकते हैं लगभग 1 मिलीमीटर पर सेकेंड चलती है। 1 मिलीमीटर, 1 millimeter is a very very small, just approximately hair thickness, yeah, you can say more than a hair thickness। तो इतनी कम वेलोसिटी के साथ ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। नाउ बिफोर आई एंड दिस टॉपिक, टुडेज टॉपिक, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। मैंने आपको आज बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सॉलिड के अंदर चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिक्विड के अंदर चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव। गैसेस के अंदर कौन से होते हैं? गैसेस वैसे तो इंसुलेटर्स होती हैं, लेकिन वो आयोनाइज हो जाती हैं जब बहुत हाई पोटेंशियल लगाते हैं, तो उनमें भी आयंस होते हैं। फिर मैंने आपको करंट का डेफिनेशन बताया। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q अपॉन T। मैंने आपको यूनिट बताया उसके, करंट के यूनिट एम्पियर होते हैं। छोटे यूनिट बताए मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर बताया। करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बताई, उसको कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं, रिवाज है वो कहने का, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि करंट हमेशा किस तरफ को होता है। जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फिर मैंने आपको बताया कि करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर मैंने करंट के आपको 3 तरह के करंट बताए, एक स्टेडी डायरेक्ट करंट, एक बेरिंग डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट आपको बताया। फिर मैंने आपको करंट डेंसिटी बताई और लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया कि जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो क्या क्या होता है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तो करंट, जो चार्ज कैरियर हैं वो मूव कर रहे हैं, वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन उनकी मोशन जो है वो रैंडम है, इसलिए नेट मोशन कितनी है, नेट मूवमेंट कितनी है, 0 है। तो करंट कितना होता है उसमें? 0 होता है। तभी तो हमें लोहे के टुकड़े को टच करके करंट नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल देते हैं, एक एंड को हाई पोटेंशियल पे करते हैं, एक एंड को लो पोटेंशियल पे करते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं वन डायरेक्शन में। और जब वो मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी टकराते हैं और आयंस के साथ भी टकराते हैं, कर्नल्स के साथ भी टकराते हैं। और जिस वेलोसिटी के साथ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दें उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो आपने इस कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक, फुल अटेंशन आपने इसको सुनना है, इंपॉर्टेंट नोट्स को बनाना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये समझ आया।